Let's pray. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us on the day of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all other evil spirits who prowl through the world, seeking the ruin of souls. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin, my mother. To thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me. Amen. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Jesus, may you increase, may I decrease. Holy Spirit, take over this session totally and completely. Let your word, Lord, come forth. Hallelujah. Striking prayer. Very much heard, Everyone talks about striking prayer, striking prayer, striking prayer. And Father Jose, who's given us this, has been, doing it and in his various this thing, and he's given. But even I realize that not completely understood as such. करते हैं. Many people attempt it, many people do it. Some people do it rightly, some people do it wrongly also. I know many people who do it very wrongly. They have with a lot of wrong intentions and wrong motives and purposes. So this was a good opportunity. Surely, thank you and the Lord to you also and Mama, that I really could go deep into it and really understand what it is. So this will be basically just a teaching session on the striking prayer with no frills at all, because there is a lot of things to understand, a lot of things to discern before we actually pray the striking prayer and how to pray it. Praise the Lord. So by definition, striking prayer is a form of intercessory, deliverance oriented prayer that appeals to God to suspend the harmful influence of evil at work in certain people or groups, not to destroy them, but to protect the innocent and lead the oppressor to repentance and salvation. Very important to understand, to protect the innocent and lead the oppressor, whoever is the person for whom we are doing the striking prayer, who's been harming us in various ways. We will understand that later. Lead that person to repentance and salvation. That is very, very important to keep in mind. We are having no animosity. We are supposed to have no enemies at all. Praise the Lord. Rather, going ahead with the word of God on this, Matthew chapter 5:44 very clearly says, love your enemies, pray for those who persecute you. If you love your enemies, pray for those who persecute you, bless them every day, pray that they are filled with the Holy Spirit and do good to them. You are walking the right Christian path, the path of Jesus Christ. Otherwise, you are conforming to the patterns of the world. Eye for an eye, tooth for a tooth. But with Jesus, we are called to bless our enemies, pray for our enemies, love our enemies, forgive our enemies, and do good to them. So that is the radical difference between the world and the mind of Christ. Between the world and the mind of Christ, keep that in mind. If you are having hatred against anyone or negativity against anyone, you are not following the path of Jesus Christ. So don't expect answers to your so called intentions and prayers that you are making, because you are following the wrong path. God's grace will be prevented from coming into your life because you are praying in the wrong way. Saint James said very clearly that you pray but you do not receive answer. You ask but do not receive. Why? Because you ask wrongly. You ask wrongly. That is why you are not getting an answer. So this is a very important thing, that keeping in mind the striking prayer. Ephesians chapter 6 verse 12 very clear. We are not contending against flesh and blood, but against principalities and powers. Okay, our battle is never against our wife or our husband or our neighbor or our mother-in-law or our daughter-in-law or any such categories that may be there. Our battle is not against them.
Our battle is against the powers of darkness which are creating discord, disunity, hatred, harm, oppression, persecution. Not against the person. All are made in the image and likeness of God. They have got deformed. They will be transformed by our prayers and by our blessings. And the striking prayer is one of the forms of prayer which is used ancillarily. Hallelujah. Elisha in 2 Kings chapter 6 verses 18 and 20 said, strike this people with blindness for protection and then restoration. Always it is protection and then restoration. Restoration has to happen in the life of the people because you are called to pray for them. You're called to bless them and pray for them, love them, and pray that they are filled with the Holy Spirit. When they are filled with the Holy Spirit, they will receive Jesus because Holy Spirit is the Spirit of Jesus. And they will start following the path of Jesus once Jesus comes into their life. Once Jesus comes into their life, they will follow the path of Jesus. They will start loving you back, forgiving you, and animosity will be finished. Like I always witness and give testimony, I have no more enemies left in this world. Praise the Lord. No enemies. All enemies have become my friends because I make sure whoever goes slightly against and I feel slight negativity in my mind, I'll pray for them and bless them. After 4 or 5 days, they come to me and they become jigri dost. Hallelujah. So that is the power of our Lord Jesus Christ and the Spirit of God. More powerful than any Nimbu Mirchi, any evil powers. More powerful. Lord is Almighty. He works. If you believe it, yes. If you don't believe it, still you are correct. Because if you don't believe it, that will keep happening to you that way. Hallelujah. हिंदी में कोशिश करूंगा क्या है क्या प्रॉब्लम यहाँ पर कि जो टेक्स्ट है और वो सब है ना वो हिंदी में मुझे बोलना थोड़ा दिक्कत होगी Not बट मैं कोशिश करूंगा आज मैं कोशिश करूंगा just 1 or 2 lines about everything, 1 or 2 lines. ओके 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 तो मैं जैसे पहले से कह रहा था स्टार्टिंग से कि स्ट्राइकिंग प्रेयर जो हम कहते हैं वो एक इंटरसेशन मध्यस्थ की प्रार्थना है और डिलीवरेंस की प्रार्थना है अपने छुटकारा पाने की मुक्ति की प्रार्थना है और वो प्रभु को के पास हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम जो लोगों के लिए प्रार्थना स्ट्राइकिंग प्रेयर करते हैं वो उनको खत्म उनका सर्वनाश करने के लिए नहीं लेकिन हम जो गरीब हैं जो तकलीफ में हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए और उनके साल्वेशन के लिए हालेलुया थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस So the 7 swords, the scriptural pattern is like this: Elisha, Paul, Peter, Jesus, that is messianic, and Jehoshaphat, Gabriel, and Jacob. These scriptural patterns are used to hinder the evil activity and open a path to repentance. Always followed by praying the divine mercy for enemies. ठीक है मैं जरा ना इसको शेयर भी कर देता हूँ तो यू विल प्रोबेबली बट आई विल बी ओके शेयरिंग इज नॉट टर्न्ड ऑन फाइन नो प्रॉब्लम इट्स ओके आई विल बी शेयरिंग द पावर पॉइंट ऑन द ग्रुप surely or with you and you can share it wherever you want. Okay, praise God. I will not go into the PowerPoint at all. So that way it will confuse everyone. They'll keep looking at that and good. It's good that the Lord has not asked me to do that. Praise the Lord. Hallelujah. Striking prayer is part of the spiritual enclosure prayer, SCP prayer. It is part of that, not an independent entity. What is the spiritual enclosure prayer? It is a 7-step sequence. 7 steps have to be prayed. Striking prayer is part of that. First is the consecration, then prayer for all, protection and deliverance. Our sister Bridget does it on the Wednesdays. Protection and deliverance, then binding and casting out prayer, which either Shelley or I do it during on the morning services. And then you do the striking prayer. And then you do the blessing prayer. And then you do the divine mercy prayer. So these are all done for protection and they are transformation, not for any revenge or hatred or negativity in our heart. Please bear that in mind. Never for any hatred, only for protection and their transformation. Whomsoever you are going to pray for the striking prayer. Hallelujah. Saint Augustine said, slay the enmity, not the man. Slay the enmity, not the man.
Saint Thomas Aquinas says it is illicit to resist evil through spiritual means. It is wrong. गलत है कि हम जो evil है उसको spiritual means से हम उसको resist करें. It is spiritual means से हम उसको attack कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में प्रेम. We should have charity, love and the right order is kept. That is very important. हम लोग स्पिरिचुअल तरीके से ईवल को अटैक कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें शक्ति दी है. यीशु ने खुद किया था और वो हमें करने को भी कहता है. हालेलुया. सेंट जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, प्रेयर इज द स्वॉर्ड. प्रेयर इज द स्वॉर्ड दैट कट्स डाउन डीमंस, नॉट पीपल. रिमेंबर, नॉट पीपल, कट्स डाउन डीमंस. And Saint Faustina said, divine mercy is for the worst of sinners. The greater the sinner, the greater the right he has to my mercy, said the Lord to Saint Faustina. And that is in her diary 723. Greater the sinner, the greater he has the right to my mercy, says the Lord. Hallelujah. Now, that was what is striking prayer. Now, why do we use striking prayer? Let us understand the second question. Why do we use striking prayer? We use striking prayer because number one, because the battle is spiritual and we do not fight people. We resist evil powers using God's word and intercession. The 7 swords show a pattern which is biblical, where God limits faculties. God limits the faculties, that is blindness, muteness, confusion, temporarily, so that violence is prevented and conversion follows. Violence is prevented and conversion follows. So 7 जो तलवार है उसको यूज करना है. वो बाइबल के द्वारा वेरियस जो उनके वाक्य हैं बाइबल के, उसके हिसाब से है. और वो सिर्फ जो अत्याचार हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, उसको बंद करने के लिए, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके कन्वर्जन के लिए, उनके परिवर्तन के लिए है, ताकि वो प्रभु के रास्ते पे आ जाएं. स्ट्राइकिंग प्रेयर का 7 swords का मीनिंग यही है. सो वी डू दिस स्ट्राइकिंग प्रेयर बिकॉज द बैटल इज स्पिरिचुअल. ऑल्सो बिकॉज लव डिमांड्स प्रोटेक्शन. चैरिटी प्रोटेक्ट्स द फ्लॉक. And pastoral charity includes shielding the families, communities from active malice. तो हमारा काम है as ministers of God, or even the priests and the people who are in the clergy, they have to shield the families and the communities from evil powers, whether they may be from the media or from the society or from any other quarters. It is the job of the pastors and the ministers who are there working for the Lord, that they understand and they protect the flock. We are called to be co-shepherds along with Jesus Christ. Co-shepherds along with Jesus Christ, even the lay ministers. And of course, the priests are the co-shepherds of Jesus. They are directly in the position of the Lord and then the bishop. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So we have to perform this and protect them from active malice. This includes the spiritual works of mercy, that is praying for the living and dead and admonish the sinner. Admonishing the sinner. Thirdly, scripture model is restrain, convert and restore. Restrain, convert and restore. Elisha, he restrained by blindness. Then he fed and then he released. Also Saint Paul, temporary blindness, and the proconsul believed. Acts chapter 13 verses 11 and 12. Zechariah was muteness and faith, and then it went on to the Benedictus. Blessed be the Lord, when he sang that. So he got transformed. Initially he was struck by blindness, his faith increased, and when he named John, he was total, and then he exalted in the Lord by praying the Benedictus, Zachariah's song, which you must have known, which we pray in the divine office every morning. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Even Jehoshaphat, he praise, his praise precedes the enemy confusion. His praising precedes the enemy confusion and then deliverance. So the motive has to be correct. The intent has to be correct. We cannot have hatred in our hearts as Catholics. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So the spiritual enclosure prayer intends salvation for those harming us, not civil punishment or revenge. It parallels. The idea is the parallel is the spiritual ICU. 3 steps: restrain the harm, treat the soul through prayer, and release the soul when they are transformed. तो रिस्ट्रेन द हार्म, पहले तो जो गड़बड़ हो रही है उसको बंद करना है, जो परसिक्यूशन हो रहा है उसको बंद करना है, पहले तो वो प्रिवेंट करना है। रिस्ट्रेन द हार्म, लोगों को शोषण हो रहा है वो शोषण को पहले बंद करना है। उसके बाद जो जिसके लिए हमने स्ट्राइकिंग प्रेयर की है उसके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है, उनको ब्लेस करना है, फॉरगिव करना है, प्यार करना है। हालेलुया, लव। ओके, एंड देन रिलीज देम, लेट देम गो नाउ। व्हेन दे आर ट्रांसफॉर्म्ड, लेट देम गो। उनका कन्वर्जन होगा जब आप प्रार्थना करोगे पवित्र आत्मा की, तो उनका कन्वर्जन होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। लेट्स गो वन स्टेप फर्दर नाउ। व्हेन डू वी डू द स्ट्राइकिंग प्रेयर? व्हाट इज हो गया, व्हाई हो गया, अब व्हेन डू यू डू इट? क्लियर स्ट्रिक्ट डिसर्नमेंट इज नीडेड, नॉट इम्पल्स। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ हो रहा है, मेरे को किसी ने तकलीफ दी है तो मैं इमीडिएटली स्ट्राइकिंग प्रेयर पे आ जाऊं, क्योंकि बहुत आसान है। अब तो फादर जो सिखाया है और अब ब्रदर भी बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी रहेगा सामने, लगे चलो शुरू हो जाओ। डिसर्नमेंट कीजिए, पहले प्रार्थना कीजिए, पहले प्रार्थना कीजिए, नॉट ऑन इम्पल्स, इंस्टिंक्ट के नहीं चलो कोई भी बोल दिया चलो स्ट्राइकिंग प्रेयर करते हैं। अरे स्ट्राइकिंग प्रेयर में आपको तकलीफ होगी अगर आप गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से, गलत मोटिवेशन से करोगे। तो डिसर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रे फॉर डिसर्नमेंट, आस्क द लॉर्ड टू गिव यू द गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड व्हेन टू डू व्हाट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज द लॉर्ड। So, firstly, where there is clear ongoing harm, example, persecution, malicious lies are there, spiritual oppression is there, injustice is there, occult black magic का, occult का aggression है, and ordinary prayers and petitions have not been sufficient. There, and the categories that are here, what Father Joseph has taught us is the terrorists, the warmongers, persecutors, exploiters and cheaters, those doing injustice, bribe takers, occult harm. Apply SCP's 7 prayer format with striking prayer in the proper step. ऐसे ही स्ट्राइकिंग प्रेयर मत कर देना, आई स्ट्राइक देम लॉर्ड विद द 7 swords एंड स्पेशली द स्वॉर्ड्स ऑफ एलिशा, मेसाया एंड सेंट गैब्रियल। ये कोई रोजरी वो डिवाइन मर्सी नहीं है, वो हर आदमी करते जा रहा है पागल की तरह। ऐसे मत कीजिए, बहुत शिद्दत से डिसन कीजिए, परखिए, परख होने के बाद कौन सी कैटेगरी है, क्या कर रही है, पूरा 7 प्रेयर का जो स्पिरिचुअल एनक्लोजर प्रेयर है वो आपको करना है। और जहां पर स्ट्राइकिंग प्रेयर का प्रॉपर स्टेप है वहां पर स्ट्राइकिंग प्रेयर करना है, और समाप्ति में, एंड में डिवाइन मर्सी जरूर करना है, डिवाइन मर्सी जरूर करना है। हालेलुया। So within a ordered spiritual enclosure prayer, again I will repeat the steps. ये भूलना मत। First is consecration. Second is prayer for all. ये फादर जो उसकी बुक में है, नहीं मिलेगा आपको तो ब्रिजेट सिस्टर बता देगी आपको, उनको बात बहुत अच्छी तरह से उनको मालूम है। ओके, प्रेयर फॉर ऑल, प्रोटेक्शन एंड डिलीवरेंस, जो शर्ली या मैं करते हैं हमारे सेशंस में, सॉरी शी ओनली डज इट, एंड देन वी डू द बाइंडिंग कास्टिंग आउट प्रेयर, बट ओनली वेयर अप्रोप्रिएट। बाइंडिंग कास्टिंग आउट भी सभी लोग नहीं करना। अगर आपको नहीं लगता कि आपका डिसर्नमेंट है कि आप कैसे प्रेयर करना है, तो आप बाइंडिंग कास्टिंग आउट मत करना। जनरली इट इज फॉर द मिनिस्टर्स हु आर having the experience to do it, and they are charismatic, and they are having the gift of deliverance and binding casting out. They know the exact procedure, और बाइंडिंग कास्टिंग आउट करके क्या करना है। बाइंड एंड कास्ट आउट एंड उसको छोड़ दिया रास्ते में तो आपको वापस आके अटैक भी करेगा वो। तो कैसे करना है,
disposition of mind, laying on of the hands of the priests and giving you the authority to go and being under the umbrellaship of the church is very important. ऐसे नहीं कि कोई भी आदमी, आप अपने लिए डिलीवरेंस कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए, टू द फर्स्ट लेवल ऑफ कंसैंग्विनिटी, जैसे फादर जोस ने सिखाया है, टू द फर्स्ट लेवल ऑफ कंसैंग्विनिटी इन योर ब्लड लाइन, यू कैन डू इट, that is okay, but just don't go and start doing binding casting out prayer for everyone, ड्रॉप ऑफ द हैट नहीं। मेरे पास शर्ली का वो मैसेज आ गया है, मेरे को एक सिस्टर ने रिट्रीट में बोला, ये बाइंडिंग कास्टिंग आउट यू आर डूइंग एवरी डे, हमको भी भेजो, हम भी करेंगे। बोला सिस्टर ये सबके लिए नहीं है, आपका पहले जब ग्रोथ हो जाएगा तब यू कम टू द राइट डिस्पोजिशन टू प्रे, देन यू प्रे, otherwise it will be problematic for you. Don't pray without discernment and without a proper prayer life and a sacramental life. Prayer life, sacramental life has to be there. If you are not having a regular prayer life, regular sacramental life, then please refrain from even doing the striking prayer. Do refrain from doing it. Don't do it, because it may have a backlash on you, because you are not protected yourself, you are not sacramentally aligned with the teaching of the church and the word of God. तो वो बहुत ख्याल रखिएगा कि प्रार्थना का जीवन आपका और सैक्रामेंट्स, होली मास और कन्फेशन बराबर आपका लाइन टू लाइन चल रहा है। रेगुलर कन्फेशन, पीपल ऑफ द रिट्रीट हु आर इन एक्टिव मिनिस्ट्री, once a week confession mandatory. In the retreat, in this meeting, who are in active ministry of any kind, once a week. If you're just doing small jobs in the parish, then maybe 15 days. Lay people, once a month at least you should be doing the confession. Don't do it only Christmas and Lent and all that. That is the church for a format for the absolute lay people who are not at all interested in the Lord. They just, because their names are like that and they have been baptized from birth, so they think they are Catholics, but they are not disciples. They are just baptized Catholics. Kalas. Holy Spirit is not vibrant in them. It is dormant in them. There is no enkindling of the Holy Spirit in them. Though they have received the sacrament of the Holy Communion, the First Communion and everything, लेकिन उनका कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो वापस वही बैप्टिज्मल स्टेट में पहुंच गए हैं। बैप्टिज्म हो गया था, पवित्र आत्मा है अंदर, लेकिन किंडल नहीं होती रोज, किंडल नहीं होती रोज। उसको जो अग्नि मिलनी चाहिए, जो स्पार्क मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। वो सिर्फ प्रार्थना के जीवन से और सैक्रामेंट से मिलता है, वरना नहीं मिलता है। एंड ऑफ स्टोरी। कोई बाजार में नहीं मिलता है, कोई प्रीस्ट आपको नहीं दे सकता है, न कोई फादर दे सकता है, कोई रिट्रीट दे सकती है। वो आपको आप खुद की पर्सनल प्रार्थना का जीवन, सैक्रामेंटल जीवन करना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम कह रहे थे बाइंडिंग कास्टिंग आउट प्रेयर, देन यू डू द स्ट्राइकिंग प्रेयर, देन यू डू द ब्लेसिंग प्रेयर, एंड देन यू डू द डिवाइन मर्सी चैपलेट। ये 7 प्रेयर का फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, पूरा स्पिरिचुअल एनक्लोजर प्रेयर का, अगर आपको स्ट्राइकिंग प्रेयर करना है। इसी के अंदर स्ट्राइकिंग प्रेयर आता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, हम मेरी जो गोवा की मिनिस्ट्री है, देयर वर अ लॉट ऑफ परसिक्यूशन, सम पीपल वर परसिक्यूटिंग। तो प्रार्थना कैसे शुरू होती थी? इन स्टेप्स के साथ। पहले तो फॉरगिवनेस की प्रार्थना होती है। लॉर्ड सो एंड सो पीपल नेम 1 2 3 4 5 6 नोन एंड अननोन, और भी कोई होगा तो लॉर्ड आई ब्लेस देम, आई लव देम, आई फॉरगिव देम अनकंडीशनली, लव देम अनकंडीशनली, ब्लेस देम। Lord, I love them very much and I care for them and I pray that they are filled with the Holy Spirit and I am filled with the Holy Spirit and I want to do good to them. Then you do the striking prayer and then you pray, Lord, may they be converted. They may join us as one. They may act in favor of us and they may enhance the ministry which they are persecuting. जैसे सेंट पॉल परसिक्यूट कर रहा था क्रिश्चियनिटी को, बाद में वो सबसे बड़ा अपोस्टल बन गया वो, क्योंकि उसने प्रभु को एनकाउंटर किया ऑन द रोड टू डमास्कस। उसके बाद वो सबसे बड़ा अपोस्टल हो गया। और कितना उसने न्यू टेस्टामेंट में सारी तो लेटर उसी ने लिखी हुई हैं सारी। तो ये सब चीजें वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि कन्वर्ट होता है तो वो आदमी कन्वर्ट होके हमारे फेवर में आ जाए। चाहे हेरारकी है, चाहे क्लर्जी है, चाहे परसिक्यूटर्स है, हर किस्म की परसिक्यूशन आती है। हम सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि सब हमारे फेवर में आ जाए। वी प्रे फॉर एवरीबडी, वी प्रे फॉर एवरीबडी, सब हमारे फेवर में काम करे। जैसे हमारी दुश्मन है, सपोज हमारे पड़ोस अड़ोस के लोग हैं, या मदर इन लॉ के लिए प्रे कर रहे हैं, तो मदर इन लॉ मेरी मदर बन जाए, मदर इन लॉ मेरी मदर जैसी बन जाए। लोगों को हंसी आती है जब ऐसे बोलते हैं, बोलता मदर इन लॉ कहते, मदर मदर तो मदर होती है। लेकिन वो ही, यही तो बिलीव इन क्राइस्ट है। व्हेन यू आर विद क्राइस्ट,
Mother in law will become mother, daughter in law will become daughter. There will be peace and harmony, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. That is what you need to strive for. If you don't strive for that, then you are living like the world, नॉर्मल जी रहे हैं आप, तो उसमें कोई मीनिंग नहीं है, वो तो चलता रहेगा लाइफ में, वो तो सभी जीते हैं। लेकिन यीशु के साथ जीवन जीना है, बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन है। बहुत आसान है, यीशु के बन के रहो। बहुत कठिन है अगर दुनिया में हो, दुनिया में रह रहे हो और दुनिया का पालन कर रहे हो, फिर बोलते हो मैं यीशु का भक्त हूं, बड़ा कठिन होगा वो आपके लिए। हालेलुया। आपको चॉइस लेना पड़ेगी, इस तरफ या उस तरफ। दोनों कश्तियों में पैर रख के आप नहीं चल सकते। यू कैनॉट कीप योर फीट इन बोथ बोथ द बोट्स। आई विल बी इन द वर्ल्ड हाफ, and then I will be here also. I will go and drink and make merry and party and go to, pubs and bars, and then I will go for holy mass also, and then after some time everything will stop. Then you will be found on some shack only. Hallelujah. Be careful. You have to give up. Sacrifice करना पड़ेगा. All that worldliness, दारू पारू, cigarette and drugs and all these parties. सेंट पॉल का आप पढ़िए, बाइबल पढ़िए ना, आपको बताएगा कि all those people who do all this, they will not inherit in the kingdom of God. They will not inherit. He's very clear. लोग कुछ भी बोले, अरे चलता है, इतना तो चलता है, दुनिया में चलता है, ये सब नहीं चलता है। अगर स्क्रिप्चर और चर्च टीचिंग के हिसाब से जाओगे तो नहीं चलता है। अपना ही ज्ञान करोगे, इंस्टाग्राम इंस्टीट्यूट एंड फेसबुक फैकल्टी एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाओगे, देन एवरीथिंग इज ओके। देन यू कैन कमिट मर्डर, यू आर स्टिल ओके। पैसा दो, खिला के निकल जाओ। यू कैन हैव अडल्ट्री, 4-5 वाइफ, 4-5 हस्बैंड, 10-15 चिल्ड्रन, इट्स ऑल ओके। एज पर द वर्ल्ड एवरीथिंग इज ओके। कुछ नहीं है, तुमने गलत नहीं किया है, सब कुछ हो जाता है। ऑल थिंग्स आर परमिसेबल बट ऑल आर नॉट बेनिफिशियल, सेंट पॉल कहते हैं। एवरीथिंग इज परमिसेबल but everything is not beneficial. You drink, it is permissible. Church doesn't say don't drink, but it is not beneficial. You come closer to the Lord, the Holy Spirit will catch you. Holy Spirit will tell you. And if you are a minister of God and you are into any kind of addictive substances, charisms will not work in your life. Charisms, this was the Father Joseph's first teaching when we became ministers. Charisms will not work. You will do gift of the gab, सब कुछ करोगे, you are good Samaritan, good nice person. Charisms will not work. Edification of the church will not happen. When you lay hands, people will not be healed. But if they are healed also, they will not be healed by the Holy Spirit. There will be no conversions. Even Satan can do healings. Many a time the Babas will come, they will do healing also. उसमें क्या बड़ी बात है? वो भी signs and wonders, miracles, healing दिखाते हैं, लेकिन they are not of the Lord. You have to discern the spirit, where the spirit is coming from the evil powers, from the Holy Spirit, or your own spirit. Praise the Lord. Hallelujah. टाइमिंग कुछ इंडिकेशन में देता हूं। डू द फुल एसईपी स्पेशली बिफोर लीगल एंड सिविक कॉन्फ्रंटेशंस। लीगल केस है, सिविक कॉन्फ्रंटेशन है, जहां आपको पता है मैं सही हूं लेकिन कोई मेरे तरफ से गलत जा रहा है, तब एसईपी करो, लेकिन पूरे प्रेम भाव से। या फिर कई लोगों झूठ बोल रहे हैं, परसिक्यूट कर रहे हैं, आपका नाम खराब कर रहे हैं, विचक्राफ्ट कर रहे हैं, सोर्सरी कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, नींबू मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके ऊपर, तब आप इसको एक्टिवली डिप्लॉय करो, पूरे एससीपी को अलोंग विद द स्ट्राइकिंग प्रेयर। आधा आधा मत करना प्लीज। चलो हालेलुया। Then, as I said earlier, always integrated. SCP, striking prayer, is always integrated with the sacramental life. Mass, confession, Blessed Sacrament, adoration, scripture reading and scripture study, rosary. मिनिस्ट्री में है तो 4 रोजरी डेली, एक नहीं चलेगा। एक इज फॉर नॉर्मल पीपल, 4 करना, 4 करना। डिवाइन मर्सी ग्रुप के हैं, 4 करना। बेथलाम मिनिस्ट्री के ग्रुप में 4 करना। मांगो प्रभु से, प्रभु 4 करने दो, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं आएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बच्चा, पति, कोई भी नहीं रोकेगा आपको, वो सब आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ये टेस्टिमनी है, विटनेस है। अगर आप सोचते हो नहीं है मेरे पास टाइम, मदर इन लॉ रोक रही है, तो आप मदर इन लॉ आप करो, 1 करो, 2 करो, प्रभु को बोलो मुझे शक्ति दो मैं 4 कर सकूं। आप 4 करोगे, 10 करोगे,
मदर इन लॉ साथ में करेगी, फिर तो 10 हो जाएगा, पति भी आएगा तो 15 हो जाएगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सो बी, एंड चिल्ड्रन विल ऑल्सो कम, फैमिली प्रेयर विल बिकम बिग, everybody will read the word of God together. See, the family becomes so beautiful, no? Hallelujah. Be positive. Jesus can do everything. Hallelujah. With the Lord, all things are possible. And rosary, divine mercy prayer, chaplet, very important. Then seek pastoral counsel. Go to the priest, and priest, and ask and take counsel. If you are unsure of what to do, take the counsel from the church, from the priests who are aware of the striking prayer, who are aware of the word of God, who are aware of it. Go and take counsel from them. Sacramentally, don't worry who's the priest. In this, importantly, go to your spiritual director or a knowledgeable priest who has got the full knowledge of that. Besides his normal ordination, he's got extended knowledge. That discernment. You pray, you will get the right person coming in your life. Don't worry, don't go marketing for that. For the council and spiritual director, don't go marketing, asking this one, that one, or go into the Chembur market, Ghatkopar market to look for that. No, no, no. You pray. The Lord will send, the right person will walk into your life. These are supernatural spiritual techniques you have to use. इधर आप सोचोगे शर्ली को पूछोगे, शर्ली बताएगी, निर्मला बताएगी, वो बताएगी, ये बताएगी, ऐसा नहीं है. ये मार्केट नहीं है. ये मार्केट में आप जाओगे इधर वसीला लगाओगे, मेरे को अच्छा स्पिरिचुअल डायरेक्टर मिल गया, ऐसा नहीं होता है. आप प्रार्थना कीजिए, राइट स्पिरिचुअल डायरेक्टर विल कम इन योर लाइफ. हालेलुया. थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हालेलुया. Then protection of families and missions. Families and missions, when we are supposed to do the SEP, we are for प्रोटेक्शन ऑफ फैमिलीज एंड मिशंस. जैसे हम लोग मिशंस कर रहे हैं गोवा में, मैंने बताया परसिक्यूशन है, वहां पर प्रार्थना करते हैं. फैमिली में परसिक्यूशन है अगर, तो आपको ये प्रार्थना करनी है. पेरेंट्स, पास्टर्स, लीडर्स, leaders of the church, leader of charismatic, leader of missions, in those who are in the retreat, who are doing any missions, are stewards who guard the flock. Acts chapter 20 verses 26 to 31. We are stewards who guard the flock. And SCP gives a very structural, non-violent, biblical way to limit evil's reach while still loving the enemies. Christ-like toughness, but Christ-like tenderness also. टेंडरनेस ऑल्सो. हम किसी को यीशु से दूर भागने नहीं देंगे, उसको खींच के लेके आएंगे. पहले उसकी फैकल्टी को बाइंड करेंगे, रिस्ट्रेन करेंगे, फिर रिस्टोर करेंगे, और फिर उसको रिलीज करेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Also, because God's justice is merciful, the goal is conversion. Goal is conversion. 2 Peter 3 verse 9. Temporary restraint, Acts chapter 13 verse 2, often comes before faith and restoration. Temporary restraint. एक आदमी पागलपन में है, उसके ऊपर शैतान हावी है, उस शैतान को बाइंड एंड कास्ट आउट करके भगाना पड़ेगा. और उसका अगर फैकल्टी यूज हो रहा है, वो फैकल्टी को स्टॉप करना पड़ेगा कि ये फैकल्टी जो हार्मिंग फैकल्टी है. अगर आप देखते हैं कि एक पति है, वो पत्नी को बहुत मार रहा है, बेरहमी से मार रहा है ऐसे बहुत लोग. या एक बाप है, वो अपनी बेटी को रेप कर रहा है बार बार. मैंने केसेस देखे हैं ऐसे, बार बार बेटी को ही रेप कर रहा है, अपनी बेटी को, खुद की बेटी को, जिसको उसने पैदा किया है, उसको रेप कर रहा है. ऐसे लोग हैं. इस टाइम पे तुमको ऐसी भी बाइंड हिज फैकल्टीज, बाइंड हिज आईज, बाइंड हिज माउथ, बाइंड हिज सेक्सुअलिटी, बाइंड हिज माइंड टोटली. दैट टाइम यू हैव टू बाइंड. स्ट्राइक with the sword. Strike with the sword, because that is a very grave. Satan has totally taken over. He has sold his life to Satan. और पूरा शैतान उसके ऊपर हावी हो गया, क्योंकि उसने अपने आप को बेच दिया है. जो अपनी बेटी को ही रेप कर रहा है, तो उसको और क्या करेंगे हम लोग? फिर हम क्या प्रार्थना करें? हाँ, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कि ये दोबारा पवित्र आत्मा से भर के यीशु की तरफ खींचा आए, अच्छा कन्फेशन करे, रेस्टिट्यूशन करे, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करे, इनर हीलिंग के लिए, उसको बाप का प्यार दे. जैसे पिता परमेश्वर का प्यार है, वैसा बाप का प्यार दे, और सारे उसके इनर वुंड्स के हीलिंग की प्रार्थना करे. और ये बच्ची जो है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, वो एक बाप का प्यार पाने के साथ साथ उसका भी चंगाई, इनर हीलिंग, इमोशनल हीलिंग हो जाए.
बाप का कन्वर्जन हो जाए और वो एक सही एग्जाम्पल देख के आगे बढ़े। हालेलुया। दिस इज द मोटिव ऑफ द स्ट्राइकिंग प्रेयर। ऐसे नहीं कि हम उसके बाप को काट डालेंगे, मार डालेंगे, फेंक डालेंगे, वो बदमाश है। बट द बैटल इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, इट इज अगेंस्ट द पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज of the underworld, of the underground. So we have to be very careful in understanding this. तैश में मत है, हम लोग गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं। सबसे ज्यादा गुस्से वाला इंसान ये दुनिया में मैं था। मेरे को बात बात में गुस्सा आता था। मेरे ओन पिताजी मेरे से डरते थे, बोलते थे इससे बात करने का बहुत डेंजर है, ये आदमी बहुत डेंजर आदमी है, कभी भी कुछ भी बकवास करेगा और ऐसा सही बता देगा तो आदमी अपना मुंह छुपा के चला जाना, इससे बात नहीं करने का। ऐसा पागल आदमी था मैं। लेकिन यीशु ने नर्म विनम्र कर दिया, एकदम विनम्र कर दिया। यीशु ने किया, मैं खुद नहीं था ऐसा। पता नहीं किसने मेरे लिए स्ट्राइकिंग प्रेयर किया होगा, शायद फादर जोस ने किया होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। Divine Mercy Chaplet, after the striking prayer, ensures that our heart stays pure. Heart has to be staying pure. Heart has to stay. दिल को पवित्र रखना है। स्ट्राइकिंग प्रेयर हम लोग हेट्रेड से नहीं कर रहे हैं, रिमेंबर दैट। हेट्रेड से नहीं कर रहे, वी आर नॉट हैविंग हेट्रेड इन आवर हार्ट। We are, so that discernment and that fine line has to not to be crossed. That fine line has to be discerned, and don't cross that line from restraining, restoring, and bringing the person back to salvation and hatred in your heart. Events will sometimes bring hatred. You want to kill, you want to destroy. Then who's coming? Who's killing and destroying? Satan. The devil comes to steal and destroy. But Jesus says, I have come to give you life, life in abundance. Hallelujah. So you have to be very careful. That fine line, be very careful. Before that, don't keep doing striking prayer left, right and center. के हम मिल गया है, फादर जोत ने सिखा दिया है, और वो शीट्स भी आ गई हैं, उसकी पीडीएफ भी मेरे को किसी ने भेज दिया, तो चलो लग जाते हैं। गहरा गहरा नत्थु का काम नहीं है ये, बहुत संभाल के करना इसको। हालेलुया। Scripture authorizes spiritual weapons. Word of God is the sword of the Spirit. Ephesians chapter 16 verse 17. Word of God is the sword of the Spirit. Praise is warfare. When you praise, it is war. Praise and worship is war. Millions of angels will come and they will help you. Praise and worship destroys the strongholds. Hallelujah. And you and I, when we walk with Jesus, we receive authority. You have authority in the name of Jesus. Mark chapter 16 verse 17 and 18, Luke chapter 10 verse 19. I have given you power and authority. I have given you power and authority. Go now. Proclaim the gospel. Heal the people. Cast out demons. Pray in tongues. When you hold the poisonous snakes, nothing will happen. You will drink poison, nothing will happen to you. That is the promise of the Lord. Hallelujah. डरो मत, डरो मत, डरो मत, आगे बढ़ो. Praise Jesus. Thank you, Lord. Some of the saints said, like Saint Louis de Montfort said, rosary as the chain which binds the evil. Rosary very, very important for deliverance and praying for such striking prayer. Rosary is very important. Don't keep the rosary away. Mama Maria is there. Every bead, Satan is very scared. And I have personal witness in my ministry where when I was at a wit's end to do what I have to do, when there are manifestations and when there are people who are really going berserk under the power of the demons, the rosary, one Hail Mary stops everything. The person is brought down. That is the power of the rosary. If you believe, yes. If you don't believe, this is just एक धागा, एक धागा है बस, कुछ नहीं है। लेकिन अगर प्रार्थना में बिलीव करते हो, रोजरी इज अ वेरी पावरफुल वेपन. हालेलुया. सेंट जॉन पॉल द सेकंड, he urged that new order in spiritual combat. Culture of life requires prayer and action. In his encyclical, he said that okay, spiritual combat is very important for the ministers of God. Thank you, Jesus. Again, I will just sum up, very importantly, the cautions. Cautions, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है when you do the striking prayer. Number one, keep charity, love central, non negotiable. प्यार नहीं है, स्ट्राइकिंग प्रेयर का मीनिंग ही नहीं, चलेगा भी नहीं और आपको बैकलैश होगा.
So keep charity very central, love very central. Intention is to protect the innocent, convert the offender, glorify God, never to harm, humiliate, or extract vengeance. Never, ever. Immediately bless those whom you have struck by praying divine mercy prayer. जिसके लिए आपने स्ट्राइकिंग प्रेयर किया है उसके लिए, for the sake of Jesus sorrowful passion, Abba Father have mercy on us and the whole world and this person, उसका नाम लो जिसके लिए आपने स्ट्राइकिंग प्रेयर किया, इस मध्यस्थ की प्रार्थना के साथ डिवाइन मर्सी को करते हुए उसके लिए स्पेसिफिकली व्हेन यू प्रे इमीडिएटली ब्लेस होता है और हार्ट प्योर रहता है. प्रेज द लॉर्ड. दैट इज द पावर ऑफ डिवाइन मर्सी प्रेयर. प्रेज द लॉर्ड. Submit to the church wisdom. Always be under the umbrellaship of the Catholic Church. Exorcism prayer आप मत कीजिए. That is for the authorized clergy. Authorized priest can only do the exorcism prayer. Laity will use the deliverance prayer, intercession prayer, but not beyond your competence. जितना competence आपको चर्च ने दिया है, जो आपको laying off of hands के साथ दिया गया है कि okay, go ahead and do this as a minister of Christ. Now you are in the line, with strong with the scripture and sacraments and prayer life. You are performing that. Now you go and pray the deliverance prayer, but never exorcism prayer. So be always under the umbrellaship of the church. Don't become smart. If you become smart, suddenly ministry will crash. If you become smart, myself, I don't need, यार ये प्रीस्ट लोग को कुछ मालूम नहीं है, मैं ज़्यादा एजुकेटेड है, मैंने ज़्यादा बाइबल पढ़ा है, मेरे को होली स्पिरिट डायरेक्टली बोलते हैं, अब्बा बोलता है मेरे से, जीसस बोलते हैं मेरे से, आई गेट एनकाउंटर एवरी डे. डोंट गेट प्राइड कम इन. प्राइड थोड़ा भी आया खलास, मिनिस्ट्री फिनिश देयर एंड देयर. बड़े बड़े मिनिस्टर्स का डाउनफॉल हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ प्राइड. बिकॉज देयर इट कम्स आई मी माई सेल्फ में आ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वहीं पे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. डिसर्नमेंट with the priest spiritual director for complex cases. डिसर्नमेंट करना जरूरी है. जहां आपको थोड़ा भी डाउट है डिसर्नमेंट कीजिए. हालेलुया. ऑल्सो स्टे विद इन द स्क्रिप्चर. यूज बिब्लिकल टेक्स्ट reverently. Avoid the biblical formulas that sound like curses. And in the name of Jesus, I curse you, I bind you, I break you, I destroy you. No, 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 no. That is, you are using the Bible, but you are using it in the wrong manner. So be very careful. Use the Bible, word of God, very reverently. They may sound like, this, when you avoid formula that sound like curses, they condemn, but they are not biblical intercession. You have to be very careful. That fine line is also there. Be very careful when you use the scripture verses. Don't use them with spite. Then they no longer are scripture. Even Satan used scripture when he tempted Jesus. Remember, after the desert 40 days of fasting, when he came in the, he was tempted. Hallelujah. Never weaponize prayer to control free will. Don't weaponize. Don't use prayer as a weapon to control the free will of a child who's going astray. Don't control his free will. Pray for him. Children, when parents come, I tell them, pray for your child. Don't try to disturb him because he'll go astray. Satan will catch him more. You pray that he's filled with the Holy Spirit, she is filled with the Holy Spirit. Their lives are controlled and guided by the Holy Spirit. Offer them love, forgiveness, bringing them back to the church. That should be your intent. That is very, very important. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So weapon मत बनाओ prayer को. Control free will को control मत करो. We ask God to limit the evil influence, not to violate the person's dignity. Okay, that person is persecuting, destroy him, Lord. Destroy him. Bind him. ये सब worldly teaching है. Worldly teaching. Be very careful. Sometimes you will be told this in the name, in the word, in scripture कि ऐसा ऐसा है. So why not? Why not? Don't do that. Be very careful. Hallelujah. Guard your own state of soul. Surely, I don't know if I'm going a little more, but I'll complete it. Give me 5 minutes, okay? I'll complete it. Guard your own state of soul. Confession, forgiveness, renouncing bitterness, very important. Humility, fasting, protection will be increased when you are humble and, fasting, very important. And prayer life, sacramental life, charity and love in the heart, that is very important. Otherwise, everything is okay. Okay, practically, how you need to go, ready to use. Formula आपको दे रहा हूं. Before you begin, consecrate the situation to the Eucharistic heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, and the Divine Mercy Ark.
Hallelujah. Pray for the infilling of the Holy Spirit. Pray that everyone is filled. Invoke the Holy Spirit. Very important. Then step number 1. Pray for all. Lord, sprinkle clean water, give them a new heart and a new spirit. For offenders and for us also, both. Second, protection and deliverance. Psalm 91, St. Michael's prayer, armor of God, Ephesians chapter 6, verses 10 to 18, and our Father prayer, deliver us from all evil. Very important. So use these prayers as laity. It's very important to use these prayers. They sound simple, but they're very important prayers. Then you have the binding and casting out prayer. This is optional. If you are not used to doing it, you're not, authorized to do it, don't do the binding and casting out prayer just for the sake of doing, just because you receive PDF, which I made PDF out of that picture, and I sent to a couple of people about it. Should not go viral in the church groups. Okay, everybody is praying then, and they are getting influence. So be very careful. Hallelujah. So only you can pray the binding and casting out if first degree family involvement is there and you are taught and authorized at the lay level. Otherwise, skip the binding and casting out. जरूरी नहीं आपको करना. Then you come step number 4, striking prayer. Format is from the 7 swords. In the name of Jesus, I strike the group of people, whoever you are praying for, with the sword of Elisha, Paul, Peter, Jesus, Jehoshaphat, Saint Gabriel, Jacob. Lord, restrain the evil, cancel the power of evil, and lead them to a path of repentance. Hallelujah. Pray continuously this 10 times and then proceed to mercy. Choose the sword properly. For the people, choose the sword properly. Elisha ka sword is when you are outnumbered and harassed. I'm going into this detail, Charlie, because I want the people to know exactly. I'll share the PDF also. Okay. Sword, St. Paul's sword is against occult acts. St. Peter is against bribery and greed. Messianic is against persecutors. We pray Elisha, Messiah, and Saint Gabriel against persecution of ministry, persecuting you rightfully in the office. Somebody is really persecuting you very badly, having, sexual overtones and harassing you and really controlling you in office or in workplace. Then you can discern, ask the Lord, is it okay? And bring that person to Jesus Christ. Hallelujah. Jehoshaphat, multitudes opposing you. Multitudes are opposing you. Many people are opposing you. You are right in the Lord, but people are gone totally crazy. Satan has taken over. Demons have taken over. So many people, multitudes. There you start singing the praise. Singing the praise. Saint Gabriel, slanderers, liars. You pray for holy silence. You bind the faculty of their mouth. They are slandering you. Liars, they are lying about you and about the situation. You pray for holy silence, that their lips may be silenced to this and they may only praise God. Hallelujah. Jacob is family conflicts, repentance and reconciliation. Love has to be there. Reconciliation has to be the aim. Then you do the blessing prayer. Father, bless them, turn their hearts to you. Let justice and mercy kiss together. Then do the Divine Mercy Chaplet and name them, like I said, name for them for the sake of Jesus' horrible passion. Abba, Father, have mercy on us and so person whom we are praying for, or persons whom we are praying for. Hallelujah. Then step 7, thanksgiving and surrender. Totally praise the Lord, forgive from the heart, and trust all the outcome. Lord, let your will be done, not mine. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. The aim is very clear. Restrain the evil influence, protect the innocent, seek the offenders' conversion and correction. Praise the Lord. Hallelujah. Tools that are to be used: Word of God, name of Jesus, praise, and divine mercy. Sequence very clear. Again, I have said consecrate, pray for all, protect, deliverer, bind, strike, bless, and mercy. What is now non-negotiable is love your enemies, no revenge, no curses, stay under the church discipline. And afterwards, intercede daily, look for the signs of prayer being answered. If you believe whatever you ask for in prayer, you have received it, you will be yours. Start thanking the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Rest, I will put it on the PDF and the presentation that I put, so people can just understand from that. In case you have any questions, always
I'm available. You can text me. I will one-on-one explain to you if you have any doubts. Thank you, and God bless you, Shirley, for the wonderful. Thank Thank you. you. Thank All you. Explain it so beautifully.